topic reduction of nitro compounds. Reduction of nitro compounds. Nitro compounds can be reduced using 3 different reagents. Okay, so if you have RNO2, ठीक है, तो ऐसे भी देखिए ना, ये ऑक्सीजन है, इससे याद रखिएगा ऑक्सीजन है नाइट्रो में, you have to convert it to what? NH2, right? Amine is what? RNH2. So what we are going to use? We are going to reduce it. And what are the reducing agent? देखिए कुछ reducing agent तो आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए. एक तो है आपके पास H2 in the presence of nickel, platinum or palladium. Okay, so we will use H2PD. It is going to give you RNH2. Then Fe plus HCl. This is going to give you again same thing, RNH2. And the last is Sn plus HCl. This will also give you RNH2. Okay. Now Fe plus HCl, this is the preferred method. Preferred method. Okay, so why it is preferred method? Because when you get Fe plus HCl, one byproduct is FeCl2, and that byproduct on hydrolysis, it once again gives HCl. So that is why we need to start with very little HCl, because one of the products also gives us HCl in hydrolysis. So we start with very little HCl. Okay, and that is why it is the preferred method of preparation. Please write. Note. The reduction of nitroalkenes with Fe plus HCl is preferred as it forms FeCl2, which can be easily hydrolyzed and forms HCl, which can be used back as reagent, Therefore, very little amount of HCl is required. Okay, so remember this point. अब ये सारी चीजें ना आपके Y type of questions में आ सकते हैं. Okay, even though if it is not present in NCERT as a question, but these questions can come as Y. Why is FeCl preferred? Why is Fe plus HCl is the preferred method for the preparation of amines from nitroalkenes? Then you will see that this is the reason. Right, the second one. Ammonolysis of alkyl halide. Okay, now this is an interesting reaction which we have already seen in the haloalkane chapter. See, hydration का मतलब क्या होता है? If I am going to do hydrolysis, then I am adding water. If I am doing ammonolysis, then I am adding ammonia. Same thing happens here. We add ammonia to alkyl halide Rx. Okay. Now this nitrogen atom, it attacks on this R group. Okay, and then this X leaves. And first of all, you get R attached to NH3, because NH3 में कोई leaving group नहीं है. Okay, so it will get a positive charge. It creates a bond and positive charge, and the X negative is here as the X negative is here, or
it is present as the counter ion, which is neutralizing the nitrogen positive charge. Now, if you react this with a base, such as NaOH, then one of the hydrogen will be taken away by NaOH and you will get RNH2. Okay, and NaX and so on. So this is 1 degree amine. You can create 1 degree, you can prepare 1 degree amine from this. Now, please listen, don't write anything. Please listen very carefully. Now, what was the source of reactivity? The source of reactivity in this reaction was the lone pair of nitrogen atom. It attacked on the alkyl halides, alkyl carbon. It attacked on the carbon atom that was attached to the halogen. Now, this nitrogen, which is 1 degree amine, this NH2, it is also having a lone pair electron. Now, if this 1 degree amine, if this 1 degree amine sees any alkyl halide, it will also attack. Right? Because the lone pair is still there, and if the lone pair is still there, then this alkyl halide with RNH2, this will also attack the RX, and then on the reaction with base and all, you will get R bonded to N, again bonded to R, and there will be 1 hydrogen left. Now this still has nitrogen atom, it is still having what lone pair electron. This will again attack on the RX, because there can be some RX which is unreacted still. There can be some RX which has not reacted with NH3 till now. Okay, I'm not saying that the NH3 is complete. I'm not saying the NH3 is completely over. It is present, but still there can be some alkyl halide which will be more near to this 2 degree amine rather than the ammonia. Okay, so this 2 degree amine will again attack on the R, and you will get R, N, R, and 1 more R with the lone pair electron. Now still the lone pair electron is there, so this will again attack the alkyl halide. And what we are going to get? We are going to get a quaternary ammonium salt. Okay. Now this nitrogen will get a positive charge. Ab iske paas lone pair electron nahi. Now this does not have the lone pair electron. That is why it will not do any reaction further on. So what do we get at last? We get, not at last, quaternary ammonium salt. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. First of all, we have only alkyl halide and we have only ammonia. So the ammonia is nitrogen with lone pair electron. It attacks on the R carbon, gives us 1 degree amine. Now, some of the 1 degree amine, they will find alkyl halide. Some of the 1 degree amine, they will find the alkyl halide and they will attack. Some of them will not find. So we will have some amount of 1 degree only. Some of the 1 degree amine which attacked on the alkyl halide, they will form 2 degree. Now again in 2 degree, there will be something which will find alkyl halide and the others will not find alkyl halide. So from 2 degree, you will form 3 degree. So there are some 1 degree, some 2 degree, some 3 degree, and some quaternary ammonium salt in this process. Now what we are getting, we are not getting any one product. We are getting a mixture of product. We are getting 1 degree, 2 degree, 3 degree, and quaternary ammonium salt in this process. That is why it is not a preferred method of preparation. So please write here. Note. अब again देखिए, ये सारे Y type of सवाल है ना. Why is this not a preferred method of preparation? Because it gives mixture of 1 degree, 2 degree, and 3 degree means. ठीक है, please write. This is, समझ में आया नवाल एंड हनीफा क्यों हो रहा है 1 degree, 2 degree, 3 degree mixture? Yes, sir. This is not a preferred method of preparation of amines. As it gives mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree, and quaternary ammonium salt. Right, next point. अब देखिए, फिर से सुनिएगा. Please don't write anything. Listen very carefully. The problem is 1 degree amine को कौन मिल जा रहा है? 1 degree amine को मिल जा रहा है alkyl halide. ठीक है? 1 degree amine को क्या मिल जा रहा है? Alkyl halide. That is why it is reacting. 2 degree amine is getting alkyl halide. So the problem is alkyl halide. So if I take a very little amount of alkyl halide and excess of NH3, then the only substrate, the only reagent which can attack alkyl halide will be ammonia.
because ammonia is in excess. अमोनिया को आप इतना ज्यादा रख दीजिए कि अल्काइल के इर्द गिर्द चारों तरफ in the surrounding you have only and only what? Ammonia. So what we can get? So we can get major product will be 1 degree amine. We will again get a mixture, but out of that mixture the major product will be 1 degree amine. So please write next. To get 1 degree amine as major product, NH3 should be in excess. Right, next, order of reactivity of haloalkane. Order of reactivity of haloalkane. Now in this, alkyl iodide will be the most reactive, followed by alkyl bromide, followed by alkyl chloride, and that's it. Alkyl fluoride, they don't show any reaction. Okay, so please write this down. Once you're done, you will write reduction of nitrate. That is the third method of preparation. Reduction of nitrites. Now we can do reduction of nitrite using lithium aluminium hydride. Secondly, we can do hydrogenation in the presence of nickel. And third, we can use sodium amalgam, Na in Hg, in the presence of ethanol. Okay, so these are the three reagents that we can use, and all of them are going to give you what? The reduction of nitrite. So please see R C triple bond N, ETOH. Carbon will get 2 hydrogens, nitrogen will get 2 hydrogens. Okay, this can be also used to prepare. Can be also used to convert benzene nitride. Now this conversion is also useful when you have to convert, for example, let us say haloalkane or alcohol to nitriles with 1 extra carbon. Okay? For example, please write. You have to convert ethanol to propanoic acid. No, to propanamine. ठीक है, इस केस में क्या करेंगे? Ethanol is 2 carbon atoms and OH. 2, 1, 2, 3 carbon atoms and OH. ठीक है? Now, first of all, I will convert this ethanol to alkyl halide using alkyl halide में convert करेंगे तो हाँ पहले ठीक है SOCl2. I will get
chloroethane. After that, I will convert this to nitrite, RCN. अब यहाँ पे देखिए, this had only 2 carbon atoms and this had 3 carbon atoms now. जब भी आपके पास ascent of carbon numbers हो एक ज़्यादा, then you will use the CN and then you can use H2PD. अच्छा, ये OH लिख दिया हमने, my bad, इसको NH2 लिख दिया. Write the fourth, reduction of amides. नवाल एंड हनीफा, ये कन्वर्जन समझ में आया आप लोगों को? Yes, सर sir. नो, ठीक है. Reduction of amines. Sorry, reduction of amides. General amide is RC double bond O NH2. Okay. तो बस यहाँ पे डबल बॉन्ड O को हटा के क्या लगाना है? H2 लगाना है. तो फर्स्ट यू विल रिड्यूस इट एंड सेकंड में आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है. सो यू विल गेट R CH2 NH2. सिंपल. देखिए आप, फिफ्थ इज इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. Please write here. I hope you remember thalamide. Thalamide has 2 rings. One of them is benzene ring, and then one of them is a ring of 5 atoms, including 1 nitrogen and the carbonyl groups. And here we have hydrogen. Okay. See, please see here. उसका आप लोग आराम से लिख लीजिएगा. This hydrogen here, it is what? It is very acidic. Why it is acidic? Because if I remove hydrogen, nitrogen will get negative charge. This negative charge will be in conjugation with oxygen atom of carbonyl. दोनों तरफ से resonance हो गया. Then it will be further having resonance with this benzene ring. So the conjugate base that I will be getting after removing hydrogen, it will be very stable. So thalamide बोलेगा कि hydrogen you can leave. Okay, so this hydrogen is very acidic. I will use KOH and I will get potassium salt of thalamide. Double bond O, N negative and K positive. ठीक है? N negative and K positive. Now this nitrogen atom, since it has got negative charge, it will be, since it has got negative charge, it will be what? Highly nucleophilic. And if you add any alkyl halide here, this will show a SN reaction. It will attack on the R, and this X will leave, and you will get nitrogen atom attached to R group. These carbonyl groups are as it is. Okay, these carbonyl groups are as it is. Now this is known as N-alkyl thalamide. अब अगर आप मिथाइल ले रहे हैं, मिथाइल हाइलाइड ले रहे हैं, so you will get N मिथाइल. यहाँ पे नाइट्रोजन में मिथाइल अटैच्ड होगा. इथाइल ले रहे तो इथाइल अटैच्ड होगा. प्रोपाइल ले रहे तो प्रोपाइल अटैच्ड होगा. So it will be in general N-alkyl. Sorry guys. Thalamide PH. ठीक है. Now you just need to add here NaOH.
plus you will get RNH2. Okay, so you can see that it is used for the preparation of one degree amine. लिखिए रिएक्शन आप लोगों ने तो बताइएगा. You write next. Phthalamide on treatment with KOH. Gives potassium salt of phthalamide. Potassium salt of phthalamide, which on reaction with alkyl halide, which on reaction with alkyl halide forms an alkylthalamide. An alkylthalamide via nucleophilic substitution. ये याद रखिएगा, SN हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे via SN. And on further hydrolysis, NaOH का मतलब ना यहाँ पे H2O के साथ NaOH है. And on further hydrolysis, forms 1 degree amine. लिखिए जल्दी इसको. यहाँ पे इसको aqueous लिख लीजिएगा, तो है ना, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है. Now, if SN is happening, nucleophilic substitution, then we cannot form alkyl, we cannot form aryl amines. Why? Because if we want to form aryl amines, we have to use haloarenes, and haloarenes do not show SN. So, just write here note. Since haloarene does not show SN, this method cannot be used for preparation of method cannot be used for the preparation of aryl amines.
सिक्स्थ लिखिएगा, Hoffman bromide degradation. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. And this is also an important reaction, Hoffman bromide degradation. Please write. See, this will be given by amides R C double bond O NH2 plus Br2, and you will have metal hydroxide. You will have potassium hydroxide, sodium hydroxide. Okay, so I'm taking here KOH, potassium hydroxide. Now, instead of potassium hydroxide, you can be given what? Both of these compounds, they will form potassium hypobromide. So they will form KOBr. Or if you are using NaOH, they will form NaOBr. Okay, तो ये याद रखिएगा. Either it will be given Br2 plus KOH, or you will be given KOBr or NaOBr. But whatever reagent is given, this carbonyl carbon will be gone, and you will just write RNH2. ठीक है, बस क्या करना है, डिग्रेडेशन यहाँ से उड़ा दीजिए, हाँ, डिग्रेड कर दीजिए, 1 carbon less, RNH2 plus, it depends whether you are using potassium or sodium, you will get K2CO3 or Na2CO3, CO3 plus KBr plus H2O. Okay, so this is important that I'm getting 1 degree amine. Please write. Used for preparation of 1 degree amine. Used for preparation of 1 degree amine. What are the reagents? KOH or NaOH, or you will find KOBr or NaOBr. Then you write the amine form has 1 carbon less than the amide. Amine form has 1 carbon less than the amide. So this can be also used for the preparation of aniline. छापिए.
Now, these type of reactions, I hope you have written this. These type of reactions are useful if you want to do degradation of what? If you want to do degradation of the carbon chain, if you want one carbon less. For example, you want to go from propanol to ethanamide. Okay, so propanol has 3 carbon atoms and OH. Ethanamine will have 2 carbon atoms and NH2. Now, first of all, what I need to do is, I need to first of all convert this to carboxylic acid. How can I convert this to carboxylic acid? Tell me guys. अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे जाएंगे? हनीफा नवाल कल पढ़ाया था, कॉपी में देख के बताइए, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे जाएंगे? तो इससे पहले जो है ना, अमीन से पहले तो आपको क्या चाहिए? यू वांट CONH2, ठीक है? CONH2 कहां से आ सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से आ सकता है. How will you get carboxylic acid? Tell me. From alcohol to carboxylic acid कैसे होगा? देखिए ना, पेज पलटिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में देखिए. अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, टेल मी अ रिएजेंट. K2CO. सॉरी, पोटेशियम क्रोमेट. हाँ वेरी गुड, पोटेशियम क्रोमेट यूज कर सकते हैं. एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, K2Cr2O7. क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 कार्बन एटम्स एंड COOH. अभी बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड. तो ये आप कहाँ पे देखिएगा? आपको देखना होगा इसको कहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टीज में. देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइड में क्या यूज करेंगे रिएजेंट? व्हाट रिएजेंट आर वी गोइंग टू यूज? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ऐसे होगा केमिकल रिएक्शंस में. जी, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. हनीफा एंड नवाल देख के बताइए. NH2 भी यहाँ पे आप जी हाँ, किसने कुछ कहा? हनीफा, नवाल. चलिए रिफत अभी आई है. रिफत आप बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको अमाइड बनाना है. आई हैव टू प्रिपेयर अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाट आर द रिएजेंट दैट वी कैन यूज? वी हैव डन दिस इन द लास्ट क्लास ओनली. Chemical properties of carboxylic acid, formation of amide. Check and tell me. वहीं पे थैलामाइड जहां पे बनाया था ना हम लोगों ने, if you remember we made थैलामाइड. थैलामाइड से पहले था, सी, थैलामाइड से पहले. नहीं मिला? हनीफा, नवाल, रिफत किसी को नहीं मिला? कल ही तो पढ़ाया है. यस नवाल. नवाल, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? मिला नहीं मिला? No, sir. नहीं मिला? बताइए कौन कौन से. स्टार्ट कीजिए. नंबर 1, केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक कैरेक्टर. एसिडिक कैरेक्टर के बाद क्या पढ़ाया हमने? बताइए, रीड द हेडिंग. नवाल. नवाल आप थी पूरे क्लास या फिर आप बीच में चली गई थी? You were No, there, sir, na? I left. You left in between only. Yes, sir. Why? So I got disconnected. फिर कनेक्ट नहीं किया आपने? No, sir. एक चीज बताइए, आपका ऐसे कितने क्लासेस छूटे हुए हैं जो आपने फिर से रिकॉर्डिंग देख के आपने कंप्लीट किया हुआ है ना? यस नवाल. Yes, sir, I watched the recordings. ओके. हनीफा आप बताइए फिर. यस हनीफा. Are you talking about the reaction with ammonia? उसमें बन रहा है अमाइड, बताइए. Yeah. है ना? तो सिर्फ अमोनिया नहीं है, उसमें एक और स्टेप है. अमोनिया और साथ में क्या करते हैं? RCOH. UH.
नहीं, Card- अमोनिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, तो उसके बाद तो Yeah, सॉल्ट बन जाएगा। उसके yeah, बाद अमोनिया ऐड करने के बाद क्या करेंगे, पानी निकालेंगे, राइट? yes. हाउ विल वी रिमूव वाटर? बाय, Will heat. हाँ, हीट ना, तो जोर से बोलिए, ये साइन किसके लिए होता है? हीट के लिए होता है, याद है ना भाई, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया एंड हीट, इट विल गिव यू अमाइड एंड देन यू विल डू डिग्रेडेशन, तो ये CO निकल जाएगा एंड यू विल गेट दी NH2 डायरेक्टली। ठीक है, so this is used for the descent of carbon atoms. You have 4 carbon, you need 3. You have 3, you need 2. You have 5, you need 4. 1 carbon less than the initial material. After writing this, please write physical properties. One degree and 2 degree amines can form intermolecular hydrogen bond, and hence they have अच्छा एक बात बताइए हनीफा, कैन यू हियर मी? Yes, no, चार्ज बढ़ने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? स्टेबिलिटी बिकम्स लो और हाई no, if the no. charge, हाँ वेरी गुड, ठीक है, बोलिएगा मत। Hence they have higher boiling point than corresponding hydrocarbons. And polar molecules. But boiling point of amines is lower than that of alcohol and carboxylic acid. Ca क्या है? Carboxylic acid, because the hydrogen bond of alcohol and carboxylic acid is formed by more electronegative oxygen atom. ठीक है, more electronegative oxygen atom. तो बेसिकली आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस ऑप्शन विल हैव हाई डेल्टा पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। So this hydrogen will have, sorry, oxygen के पास high delta negative, और इस हाइड्रोजन के पास you will have high delta positive. So if positive charge is high, negative charge is high, then in that case, the bond, the force of attraction between oxygen and hydrogen is going to be also very strong. Okay, and nitrogen is less electronegative. That is why the charge on hydrogen will be less, and that is why it will be having less interaction. Now write next. Since 1 degree amine has 2 hydrogen atom per molecule, it can form more hydrogen bonds, therefore has higher boiling point. ठीक है, amines के मामले में if I have RNH2, this will have the highest boiling point.
After that, R2NH. And after that, R3N. So 1 degree ka highest, 2 degree, and then 3 degree. Right about solubility. Amines are soluble in water as they can form hydrogen bond with water. As they can form soluble in water as they can form hydrogen bond with water. But again, solubility जो है वो alcohol से कम होगी, and also solubility will decrease as the number of carbon atom will increase. Okay, but क्या लिखेगा, एक अलग पॉइंट लिख लीजिए. The solubility decreases as the number of carbon atom increases. Right, third point, amines are less soluble than alcohol in water. As nitrogen has lower electronegativity than oxygen atom. अब लिखिए chemical properties. In chemical properties, the first topic is basic character. Okay. In basic character, we will look at 3 things: reaction with the reaction, and it shows reaction with HX. Then we will talk about the basic strength. उसमें हम KB और PKB के बारे में बात करेंगे. And after that, we will also look at the effect of substituent. Okay, we will look at the effect of substituent. Please write here A part. Reaction with HX. No, here. In reaction with HX, you will have amines. They will react with HX. Now, hydrogen will be delta positive
and halogen here will be delta negative. Nitrogen with its lone pair electron, it will attack on the hydrogen here, and you will get R. Now nitrogen will get the 3 hydrogens with a positive charge because it has now 4 bonds, and X negative. Okay, so it will form a salt, and similar reaction can be shown by aniline also. And X negative. Please write. Amines have lone pair electron. On nitrogen. Due to which they behave as Lewis acid. Sorry, they behave as Lewis base. ठीक है? So nitrogen के पास it is not giving any OH negative. ठीक है? आपके पास 3 थ्योरी अगर आप लोगों को याद हो, there is Arrhenius acid base theory, there is Lewis acid base theory, and there is Bronsted acid base theory. ठीक है? तो आपके पास अगर हम बात करें Arrhenius की, Arrhenius के बाद आप Bronsted को लीजिएगा. ठीक है? Bronsted, and then you will have Lewis. Arrhenius की तो Arrhenius बोलता है कि H+ दिया तो OH negative दिया तो base. Bronsted says that if it gives H+ तो ये acid है, if it takes H+ तो ये base है. Lewis बोलता है that if there is a electron deficiency, then it is going to be what? It is going to be an acid. If there is electron richness, then it is going to be what? It is going to be a base. So we can see that there is nitrogen is electron rich, and that is why it is acting as a base here. It is acting as a base. Now, why it is electron rich? It is electron rich because of the lone pair electron. Okay. So this is why amines they behave as Lewis base. Right, next the basic strength. Now basic strength can be shown when I add NH2 to water. Then again, this is H+, this is OH negative. So you will get RNH3 positive, and you will get OH negative. Okay. So we measure the basic strength by using what? Equilibrium constant K. Now K is the same amount of product upon amount of reactant. Okay. Now what is the product here? The product here is RNH3 positive. And OH negative. And in the reactant, we have RNH2 and H2O. Now, since the concentration of H2 is constant, I will multiply this K into the concentration of H2O. This will be equal to the Kb, which is equal to RNH3 positive OH negative divided by RNH2 only. Okay. Now we can easily see if the amount of product is high, that means that there is more dissociation, we have more basic activity because OH negatives increase, right? So we can say if Kb is high, that means it is a strong base. If pKb, but we use pKb, pKb will be what? Minus log of Kb, and यहाँ से आपको पता है strong base has lower pKb value. Why? Because if the Kb is increasing, if you have strong base, Kb will be high. If Kb is high, negative of Kb will be what? Negative of Kb will be low. है ना? चाहे वो log हो, चाहे log नहीं. If Kb is high, log of Kb will be high, but minus log of Kb will be lower. है ना? उतना ही negative हो जाएगा.
Then you will write the third point, effect of substituent. छापिए, let me know once you're done. Strong base लिखिएगा, spelling mistake है यहाँ पे मेरे लिए. Strong base has lower pKb value. लिखिए सबने, हनीफा, नवाल and Rifat. All of you done? Yes. Effect of substituent में please arrange and then you will write it down. Here you will compare also ammonia, because ammonia में भी क्या है आपके पास, you have nitrogen and 3 hydrogens. So we have ammonia. Then we have 1 degree amine. Then we have 2 degree amine. And then you have 3 degree amine. All of these will act as base because of the presence of lone pair electron. And because nitrogen is what? It is electron rich. Nitrogen is electron rich. Now, if it is electron rich, that means if I increase the electron richness, please answer कीजिएगा हनीफा, नवाल और रिफत. अगर हम electron density और बढ़ा दें, if I increase the electron density, then it will be a good base or bad base. बताइए, strong base या weak base? 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine, all the amines and NH3, all of these are base because they have electron rich nitrogen atom. If I increase the electron density on nitrogen atom, then basic character will increase or decrease. Tell me. Increase. Hanifa, Nawal, and Rifat. Increase. Yes. Hanifa, Increase. Nawal, what do you think? Increase. Rifat? Increase. तो अब इसमें बताइए सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे होगा? सब्स्टिट्यूएंट ही अलग है ना, एक में आपके पास एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है. Then you have 1 alkyl group, then you have 2 alkyl group, and then you have 3 alkyl group. Now, according to this, tell me which is going to be having the highest electron density, 1 degree, 2 degree, or 3 degree? 3 degree. 3 degree में why? Because all the alkyl groups are what? These are electron releasing groups, है ना? Electron releasing group है तो ये क्या करेंगे? They will give the electron density to a nitrogen atom and they will increase the electron density. So this is known as electronics. So क्या बोलते हैं? Electronic effect, और इसको short में electronics बोलते हैं. That if I just look at the electron richness या फिर deficiency, है ना? Electron rich की बात करें तो base, electron deficient की बात करें तो acid. If I just look at the electron richness or deficiency, then I will categorize the basic character for electron richness. I will categorize 3 degree as the highest, after that 2 degree, after that 1 degree, and after that ammonia. This is the basic strength if I'm just looking at the electronics. Now, I will change this alkyl group, ठीक है, to CH3. तो फिर आप लोगों को exactly पता चलेगा हो क्या रहा है. Now, let us take, we have CH3. Here you will also have carbon, and both of these carbon will have 3 hydrogens.
ठीक है, 3 हाइड्रोजन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए मॉलिक्यूल को तो मूव करना पड़ेगा, इज दैट राइट? यस और नो? हनीफा, नवाल, रेफर। Molecule has to move because it has to give electron, correct? Yes, sir. Not you tell me which is going to move most easily, which can donate the electron most easily. Physically किसके लिए possible है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देना यहाँ पे? Tell me guys. इसको बोलते हैं स्टेरिक्स, स्टेरिक इफेक्ट। बताइए सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन देता है? अब इलेक्ट्रॉन रिचनेस की बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है। फिजिकली मूव करके इलेक्ट्रॉन देना सबसे आसान किसके लिए होगा? अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? टेल मी गाइस। अमोनिया। दिख रहा है ना सबको? लॉजिकल, यस और नो? Yes. बिकॉज अमोनिया छोटा है, उसमें आपके पास कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है, तो अमोनिया कैन बी मूव्ड इजीली एंड इट कैन गिव द इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, दिस इज द बेसिक स्टेप। नाउ वी आर गेटिंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट, यस और नो? प्लीज टेल मी। सही है? Yes. Yes, sir. तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बेस आवर कंक्लूजन, जो भी हमारे पास ऑर्डर होगा इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, दैट ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस की सबसे लीस्ट पीकेबी वैल्यूज किसके हैं। ओके, लीस्ट पीकेबी वैल्यूज किसके हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जॉब लिखेंगे। सो वी कैन नॉट गेट द थिंग्स on the basis of electronic statistics because we are having conflicting results. Okay, so please write, since basicity is determined by multiple factors, since basicity is determined by multiple factors with conflicting results, we will conclude with experimental results. ठीक है, लिख लीजिए इसको, लेट मी नो वंस यू डन। अगर लिखा नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड वंस यू डन। ओके, Prefer just waiting for you. Let me know once you're done. 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 हाँ, ट्रेस कर देते हैं। अच्छा, देखिए, if you have methyl substituent, ठीक है, तो methyl substituent में 2 डिग्री will be the most basic, then you will have 1 degree and then you will have 3 degree and उसके बाद होगा अमोनिया। methyl substituent यानी C2H5, नहीं सॉरी, methyl substituent यानी CH3, CH3 whole twice NH will have the highest, followed by CH3NH2, followed by CH3 whole thrice, nitrogen, and at the end you will write ammonia. If you have ethyl substituent, here also 2 degree is highest, followed by 3 degree, followed by 1 degree, and then followed by ammonia. C2H5 whole twice, NH, C2H5 whole thrice, nitrogen, C2H5NH2,
followed by NH3. उसके बाद एक नोट लिख लीजिए, अराइल अमीन्स यानी कि एनिलीन, इसमें NH2 is directly attached to benzene ring. Aryl amines are less basic than amine because number one, pH group है ना, NH2 में क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, तो pH group is electron withdrawing group, therefore decreases the electron density on nitrogen. Second, the lone pair of nitrogen, the lone pair of NH2 कर लीजिए on aniline is delocalized due to resonance. Therefore, it is less available. Done? All of you, yes or no, please tell me. Yes, sir. No, right next. Aryl amines versus ammonia. ठीक है, देखिए, if I take aryl amine, that is aniline, benzene ring directly attached to NH2, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन, इसको आप दीजिए H+, this will convert itself to NH3 positive. यहाँ पे एक सेकंड, इसको सर्कल में बनाइए, इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। एक तो ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस दिखाएगा, एंड दिस रेजोनेंस विल बी वेरी सिमिलर टू द रेजोनेंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो यू विल गेट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक रेजोनेटिंग, एक तो सबसे पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जो आपके पास स्टार्टिंग होगा, लाइक दिस। यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज वंस एट द ऑर्थो, वंस एट पैरा, वंस एट दिस ऑर्थो। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जाएंगे, एंड देन यू विल गेट वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास ये डबल बॉन्ड जो है ना, इस तरह से नहीं होके, दे विल बी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास ये आपका एंड स्ट्रक्चर होगा। स्टार्टिंग स्ट्रक्चर देख लिया आपने, एंड देन यू विल हैव 3 स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन इन व्हिच यू विल हैव नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो, पैरा, एंड देन अगेन ऑर्थो। So here you will have 5 resonating structure, and here you will be having, in this case this is aniline. इस केस में बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, बट डोंट राइट दिस। देखिए, अगर आपने इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, ओके, now in this case you will have double bond nitrogen which is attached with 3 hydrogens. These bonds are as it is, and you will get a positive charge here. The problem with this is nitrogen is having how many bonds? 5 bonds. 5 bonds means what? 10 electron.
है ना? Now, nitrogen is a second period element. It cannot have more than 8 electrons. 8 electrons से ज़्यादा exceed नहीं कर सकता because it does not have any space left. Second period के बाद third period आता है, वहाँ पे d orbital है, d subshell है. That is why it can have more than 8 electrons. Octet rule is not valid after second period, but till second period, the octet rule is very valid, and nitrogen cannot have 10 electrons. So it will not have a resonating structure in this manner. It will only have a resonating structure because of the alternate pi bonds of benzene ring. Okay. Now, alternate pi bonds of benzene ring can also be in this form. This will go here, this will go here, and this will go here. उस तरह से आपके पास you will have one more resonating structure, that is NS3 is as it is, positive charge, and you will have the double bond in this manner. Now, this anilinium ion, it has only two resonating structure. It has only what? Two resonating structure. तो सबसे पहली बात तो अब ये बताइए, more resonating structure means more stable, right? More resonating structures means more stable. And यहाँ पे देखिए, it has having, see, the initial structures are same only. ठीक है, initial structure same ही है, बस यहाँ पे आपके पास it is having 3 extra resonating structures. ठीक है, it is having 3 extra resonating structures. और यहाँ पे जो positive charge है, it is not even delocalized. Resonance is happening inside the benzene ring only. Okay, this positive charge is not stabilized. That means what? Aniline, will aniline want to convert itself to anilinium ion? Tell me, yes or no? Which is more stable, aniline and the ion here, that is anilinium ion, which is more stable? Which will be more stable, aniline or anilinium ion? Yes, guys, Hanifa, Nawal, Rafat, tell me. Aniline. Aniline will be more stable, है ना? तो aniline तो चाहेगा ही नहीं कि anilinium ion में हम convert हो जाए, ठीक है? This is the one reason that aniline is less basic than ammonia. और ammonia के पास ऐसा कुछ ही नहीं. Ammonia का NH3 से, if you convert this to NH3 positive, sorry, NH4 positive, then this nitrogen atom does not have any stability. यहाँ पे भी lone pair का कोई resonating structure नहीं है, so it can easily donate the electrons and it can form what? The ammonium ion. ठीक है, तो यहाँ पे it can easily donate the electron and act as a base. But एक reason सबसे पहला क्या है इसका? This electron, lone pair electron is delocalized. Second reason आप लिखिएगा, phenyl group is what? Phenyl group is what? It is electron withdrawing. Third reason is what? Aniline has more resonating structure than anilinium ion. That is why it will not convert to anilinium ion. 3 reasons है, and there is no such reason for aniline. Sorry, there is no such reason for ammonia here. ठीक है? So aryl amine versus ammonia. So we'll write first of all, lone pair electron of NH2 in aniline is delocalized, therefore less available. Second point, pH group in aniline is electron withdrawing group. Which decreases the electron density on NH2. Last point, aniline will not convert to anilinium ion easily, as aniline has 5 resonating structure, but anilinium ion has only 2 resonating structures. Right, due to the above reasons, aniline is less basic than ammonia. Right here,
इतना लिखिए पहले। Presence of electron donating group on aniline increases basic strength. Decreases basic strength. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आपके पास CH3 हो जाएगा या फिर यू विल हैव OCH3. Now, in conclusion, you can write out of ammonia, aniline, arylamine सारे में the most basic will be 2 degree. उसके बाद आएगा 1 डिग्री या 3 डिग्री, उसको हम लिख लेते हैं एलिफैटिक. एलिफैटिक अमीन के बाद आएगा नंबर अमोनिया का. अमोनिया के बाद आएगा एनिलीन का या फिर अराइलामीन का. चलिए all of you done? Yes or no? Hanifa, Nawal, Rifat, done? Yes, sir. ठीक, सवाल लिखिए. Compare the pKb values of following. C6H5NH2 A. B is C2H5NH2 B. C2H5 whole twice NH. Then you have NH3. चलिए सबसे पहले ना हम बता रहे हैं ऐसे सवालों में क्या कीजिए, आप पहले इसको बताइए C6H5 क्या है. 2 डिग्री है, एलिफैटिक है, NH3 है, अराइल है. ठीक है, उसमें क्लासिफाई कर दीजिए क्या है ये. C2H5NH2 क्या है, 2 डिग्री है या फिर 1 डिग्री. एलिफैटिक में आपके पास क्या आ जाएगा, बस एक ही आ जाएगा 1 डिग्री और 3 डिग्री है ना. फिर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर अराइल अमीन या फिर अमोनिया क्या है. उसी तरह C क्या है, उसके बाद D क्या है. ठीक है, अब उसके बाद आपके पास दिस इज द मेन कंक्लूजन. इससे कंपेयर करके आप लिख दीजिए आंसर. सेंड द आंसर ऑन व्हाट्सएप. कॉपी में कीजिए, पहले लिखिएगा यहाँ पे ये क्या है, ये बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, किस क्लास में आएगा.
Okay, send the answer. अच्छा, आप सीधा करके क्यों नहीं भेज देती हैं आंसर? अब हम कैसे पढ़ें इसको, बताइए जरा। स्क्रीन में हमने खोला हुआ हनीफा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट, सही है। एक तो टेस्ट में जब आप लोग ना, टेस्ट में आंसर आता है ऐसे लिखा रहता है, पेज आप लोगों ने इस तरह से फोटो खींचा रहता है, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखा रहता है। जापानीज लगता है, जापानीज में पता है आप लोगों को ऐसे लिखा जाता है, जापानीज ही है, ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते बच्चे। चलिए जी, बताइए। नवाल एंड रफत, C6H5NH2 क्या है ये? 2 डिग्री है, एलिफैटिक है, 1 डिग्री है, NH3 है, अराइल अमीन है, क्या है ये? नवाल एंड रफत, टेल मी, C6H5NH2 क्या है ये? यस रिफत, रिफत जल्दी बताइए। नवाल, टेल मी, C6H5NH2 क्या है ये? नहीं पता? नवाल एलि जी, रिफत जोर से सर बोलिए, आवाज नहीं आई, जोर से। सॉरी, एलिफैटिक एलिफैटिक है? नहीं। C6H5 आप कैसे बना सकते हैं? हमेशा याद रखिए, C6H5 क्या, आपके पास फेनाइल रिंग है और उसमें आपके पास NH2 लगा हुआ है, क्या है ये बताइए? अराइल ठीक है, दिस इज अराइल। C2H5, C2H5 क्या है? हमको नाम नहीं लेना है, प्लीज माइक ऑन करके खुद बता दीजिए। एलिफैटिक हनीफ, नवाल एंड रिफत को नहीं पता क्या है ये C2H5? से यस और नो। हाँ रिफत, क्या है ये? एलिफैटिक अमाइन एलिफैटिक में क्या है, 1 डिग्री है या 3 डिग्री है? 1 C2H5 होल ट्वाइस। अरे फिर नाम लेंगे क्या हम? माइक ऑन करके बताइए क्या है? 2 डिग्री है, 1 डिग्री, 3 डिग्री, NH3 या फिर अराइल, क्या है? C2H5 होल ट्वाइस NH। हनीफा आप मत बताइएगा, नवाल एंड रिफत, टेल मी। नवाल नहीं पता? यस नवाल, आवाज नहीं आ रही क्या नवाल को? रिफत आप बताएं। एलिफैटिक अरे एलिफैटिक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या है ये बताइए ना एलिफैटिक में। यस रिफत, 1 डिग्री 1 डिग्री है। नाइट्रोजन में कितने, इसका आप शेप बना सकती हैं, देखिए यही है ना स्ट्रक्चर, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन में कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं? कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये बताइए सबसे पहले आप। हाँ रिफत, कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन में? जोर से बोलिए। यस रिफत, टेल मी। नहीं पता? रिफत नहीं पता? जोर से बोलिए। अरे जोर, आवाज नहीं आती ना सही से आपको, प्लीज थोड़ा थोड़ा तो तेज बोलिए।
Yes, Rifat, tell me. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। माइक ठीक कीजिए, ठीक है ना आप लोग। आधी चीजें आप लोगों को समझ ही नहीं आएंगी, माइक ठीक नहीं, आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है, यानी कि इथाइल ग्रुप, एंड दूसरा भी क्या है, इथाइल ग्रुप। बताइए 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या है रिफत? 2 डिग्री। बनाना आना चाहिए अब आप लोग को स्ट्रक्चर, ठीक है ना। या तो पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब घर जाके आप थोड़ा तो प्रैक्टिस किया कीजिए स्ट्रक्चर से। आप मतलब यहाँ से आपके पास ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। दिस वी हैव अमोनिया। ओ बाय द वे रिफत, सॉरी हनीफा, आपका आंसर ना सही नहीं है। हमने पीकेबी वैल्यूज बोला है ना, तो आपने आपको उल्टा आंसर कर दिया है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बताइए? हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? रिफत आप जवाब दीजिएगा। रिफत टेल मी, हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? ABCD। ए। ए का हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं ना? हाँ, क्या लिखा है ऑर्डर में बताइए तो, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है? ये ऑर्डर नहीं दिख रहा है आपको। रिफत क्या हो गया है? क्या पूछा हमने रिफत? सी सी का होगा हमने क्या पूछा? बेसिक स्ट्रेंथ। किसका सबसे ज्यादा होगा बताइए? सी का। उसके बाद, उसके बाद, बी। उसके बाद, डी। उसके बाद ए। पीकेबी वैल्यू बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? रिफत आप ही बताइए, पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? ए। एंड देन डी। उसके बाद, बी। उसके बाद सी। प्लीज राइट दिस डाउन, ठीक है। दूसरी चीज, हम आप लोग को बहुत, आई मीन आई एम सेइंग दिस लॉट ऑफ टाइम, कंसेप्ट पता रहेगा, स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा, नहीं आएगा आप लोगों का आंसर लिखने, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर्स में, एटलीस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सारी चीजें आप लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, है ना। या तो आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, घर जाके इतनी दफा हमने, आप लोगों को तो ऐसा लगता है आप लोगों ने लास्ट, जो लास्ट क्लास होती है आप पढ़ते ही नहीं है, आप लोग नोटबुक खोलते ही नहीं है। अभी भी टाइम है, स्टार्ट कर दीजिए अभी से पढ़ना, ठीक है। प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट जो आ रहा है ना, हालो अल्किन हालोरीन और इन सब चैप्टर्स का, अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स तो हो गया, नेक्स्ट टेस्ट आपका हालो अल्किन का ही होगा ना, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, हालो अल्किन हालोरीन्स। अच्छा, आपके ना शायद नोटिस में अल्कोहल्स भी होगा, लेकिन अल्कोहल्स को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। हालो अल्किन हालोरीन का ही होगा। यू विल हैव द नेक्स्ट टेस्ट जो होगा ना, 30 को आपके पास इसका होगा। हाँ, 6 को अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का होगा, अभी हालो अल्किन हालोरीन का ही होगा सिर्फ, ठीक है। विल बी सर ओनली हेलो हालो, अल्केन। सॉरी, हेलो अल्केन टेबल में। नहीं उसमें ना एड अल्कोहल्स भी लिखा हुआ था, मतलब वो मेरे से मिस्टेक था, हमने जब भेजा था ना तो हमने अल्कोहल, हमने सोचा था पहले हालोकिन हालोरीन और अल्कोहल को साथ में ले लेंगे, बट फिर हमने उसको मतलब डिलीट करना भूल गए। PDF जो मिला है ना आपको, उसमें ध्यान से देखिए, हालोकिन हालोरीन एंड अल्कोहल है, तो अल्कोहल नहीं आएगा, बस हम यही बताना चाह रहे हैं, ओके। ठीक है। 30th को हालो अल्केन एंड हालोरीन्स, राइट। नेक्स्ट, असाइलेशन, नहीं सेकंड होगा ना।
Now, in acylation, you can use many reagent. You can use acylation. For acylation, you can use acyl chloride. You can use anhydride, or you can use esters. Okay. Now, but I'm going to explain all of these reactions will be very similar. उसमें आपके पास ये carbonyl इतना group जो है ना, this group, this will be attached to the nitrogen atom. ठीक है, C double bond or CH3 या फिर कोई भी R group आपके पास लगा हो. Suppose this is R, this is R, and this is R. ठीक है. So you have nitrogen. This should have two hydrogens like this. ठीक है. This should have two hydrogens like this, or at least one hydrogen. Plus you have R, C double bond O, Cl. Okay. So first of all, the nitrogen will have the lone pair electrons. This lone pair electron will attach on the carbonyl carbon, because this carbonyl carbon will be delta positive. It is attached with oxygen and chlorine. Okay. And as soon as it will attack here, this pi bond will break, and you are going to get R, the carbon atom with double bond O. Sorry, abhi to single bond O ho jayega because pi bond has been broken. Negative charge and the chlorine. Now this carbon atom will be attached with nitrogen. This nitrogen has two hydrogens, and it also has what? It also has ethyl group, two carbon atoms like this. Now nitrogen will get a positive charge. Okay, nitrogen के पास क्या आ जाएगा? Positive charge. And this nitrogen atom, it will get away with one of the hydrogen because यहाँ पे chlorine है. Chlorine यहाँ से निकलेगा इस तरह से, ऐसे hydrogen पे attack करेगा. And this chlorine will take the electrons from carbon atom. As soon as it will take the electrons from carbon atom, this oxygen atom will give electrons here. ठीक है? And this hydrogen atom is going to give the electrons to nitrogen atom. यहाँ से आपके पास HCl molecule निकल जाएगा, and you will get R, carbon atom with a double bond O now. This carbon atom is attached to nitrogen. This nitrogen is attached with one hydrogen and the two carbon atoms, ethyl group. Okay, so what we have got? We have got N-ethyl ethanamide. ठीक है? R group है यहाँ पे, तो N नहीं लिख सकते हैं. But we have got a amide here. क्या मिला है हम लोगों को यहाँ पे? We have got an amide, substituted amide, C double bond O and NH2. Please write here. One degree and 2 degree, 1 degree, 2 degree, and 1 degree, 2 degree, and aromatic amine reacts with acid chloride, anhydride, and esters to form amides. To form amides. ठीक है, यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख लीजिए. You have all got all the RC double bond O except the reaction with RC double bond O H. If you have RNH2 plus R dash COOH, तो एक एसिड है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, and this will act as a base and you will get a salt. You will get RCOO negative, NH3R positive, and you will get a positive charge on the nitrogen atom like this. Okay, so यहाँ पे salt बन जाता है. This reaction is more important, acylation. We'll also see acylation reaction once again, but we'll do acylation with anhydride when we are having the reaction of the electrophilic aromatic substitutions of aniline. Okay, so please write this down. Let me know once you're done. In the next class, we have two important reactions. One is carbylamine test. Then there is one more reaction that is with Innsbruck reagent, and then you have a reaction of electrophilic aromatic substitution, which is important.
After electrophilic aromatic substitution, we will talk about diazonium salts. Okay. अच्छा एक और चीज हम बोल रहे थे. All of you can attend the class on Wednesday 9:30 a.m. Yes. All of you? Yes, sir. Yes. Okay. Let me know if you're done.